Friends, this is part 4 and here I continue where I left in part 3 with our journey towards the beautiful Bagh Buddhist caves. Once again, the journey through the countrysides is really beautiful. One would definitely enjoy the drive all through. The distance is almost 176 kilometers and would take another 4.5 hours. We are around 4 kilometers from the Buddhist caves at Bagh. देखते हैं अभी खुला है कि नहीं, देखते हैं कितना ऊपर चढ़ना पड़ता है। अभी रास्ता तो ठीक ठाक था। और 7 मिनट दिखा रहा है। लेट्स सी, होपफुली खुला हो। ये लास्ट के 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो स्ट्रेच है बिल्कुल गांव के बीच में से। इंटरेस्टिंग सा रास्ता है, देख सकते हैं। The Bagh Buddhist caves are a group of 9 rock-cut caves located in Dhar district of Madhya Pradesh. They are renowned for their mural paintings considered to be masterpieces of ancient Indian art. Dating back to around 5th to 6th century CE, during the Gupta period, the caves are named after the village of Bagh and are located on the banks of Baghini river. These caves were first discovered in modern times in 1818. The monument is located at a distance of 97 kilometers from Dhar town. The caves are examples of Indian rock-cut architecture rather than naturally formed. The Bagh caves, like those of Ajanta, were excavated by master craftsmen on perpendicular sandstone rock face of a hill on the far bank of seasonal stream, the Baghani. All of the caves are viharas or resting places of monks, monasteries having quadrangular plan. A small chamber usually at the back forms the chaitya, the prayer hall. Most significant of these 5 extant caves is the cave 4, commonly known as Rang Mahal, Palace of Colors. हम फाइनली बाघ बुद्धिस्ट केव्स के अंदर हैं। यहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था हमारा। कल स्टैचू ऑफ यूनिटी जाते समय हमने एक जगह पर बोर्ड देखा था, फिर कल ही पता किया, कल ही डिसाइड किया कि वापस जाते समय इसको कवर करेंगे। खुला है अभी 4:15 बजे, मेरे ख्याल से 5 बजे बंद होता है। तो लकी थे हम कि हम कवर कर पाए आज। ये रहा सामने केव्स। रन रन दा मामा के दो कपात कर दो ने। बोल
ओके देख भी There is a big stupa inside this big cave here, and there are these Buddha sculptures. It's very dark here, very dark. ये यहाँ का सबसे बड़ा गुफा है और बहुत डार्क है। इसमें अंदर एक बहुत बड़ा स्तूपा है और दोनों तरफ गौतम बुद्ध की स्टैचूज हैं, मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे एक शिवलिंग भी है और गणेश की खंडित मूर्ति भी है।
है देखे चलो। The paintings on the wall and ceilings of the viharas of Bagh, the fragments of which are still visible in Cave 3 and Cave 4, remnants seen also in Caves 2, 5, and 7, were executed in tempera. Cave 2 is the best preserved cave, also known as Pandava Cave. These paintings are materialistic rather than spiritualistic. Most of the pillars in the caves have been reconstructed from the original decaying ones. According to history, Buddhist monk Dattaka constructed these caves. ये बाग में बुद्धिस्ट केव्स की एंट्री है, आप देख सकते हैं। तो निकल रहे हैं हम यहाँ से। अब हम जाएंगे खुक्सी, वहाँ पे शायद होटल्स हैं, तो वहाँ पे एक होटल में, किसी होटल में चेक इन करेंगे एंड लेट्स सी।
So friends, with this I come to the end of part 4 and episode number 2. Till the next episode, do take care of yourself and bye for now.